हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्ट्रोस क्लासेस। आज हम क्लास +1 के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें +1 में चैप्टर 4 इज गोइंग ऑन। ओके, नाउ ऑन दिस चैप्टर 4 दिस इज द लेक्चर नंबर 6। ओके, एंड miscellaneous exercise of this chapter from NCERT book, question 11 to 14 we have to do. Last questions of this chapter miscellaneous exercise. Okay, now question 11 is, what is question 11? Is if alpha beta are two very complex numbers with a beta modulus equal to 1, ये given, then find the value of this. So one formula we know that this also algebra rational in the complex number we have solved like that, z1 z2 and z1 plus z1 1 plus that z2 divided by that we have done. So like this question we have done, but now it is modulus here. So modulus we know, modulus whole square, one formula we know. What we know? Because any complex number modulus whole square of modulus we know is equal to z into z conjugate. This, because this, apply this, so let this z full inside. So then modulus whole square solution. So we can take beta minus alpha upon 1 minus alpha conjugate into beta. Modulus this whole square we can take. Now solution. We have taken whole square, but find modulus value, then whole square, because whole square formula we know. Okay. Then this by the formula this, what we can write as it is, this into as it is this beta minus alpha upon 1 minus alpha conjugate into beta. This into conjugate of this. So conjugate of this beta conjugate minus alpha conjugate upon 1 minus conjugate alpha and then beta conjugate. This. Now multiply both, then numerator into numerator, beta into beta conjugate, beta into beta conjugate minus beta into alpha conjugate, okay, beta की मल्टीप्लाई हो गई माइनस अल्फा इनटू बीटा conjugate minus plus each term to each term multiply, then divide by multiply numerator 1 into 1 1 into alpha minus beta alpha beta conjugate as it is. Okay, then minus alpha conjugate into beta
Okay, and then minus minus plus alpha into alpha conjugate into beta conjugate. This multiplied. Okay, then simplify this left hand as it is. Okay, then we now modulus of beta. So modulus of beta square is equal to beta into beta conjugate this, because and modulus beta value is 1. So 1 whole square is equal to beta conjugate. Okay, so that is 1. So beta into beta conjugate equal to 1. Put this value here, then beta conjugate use here, 1 minus beta alpha conjugate minus alpha beta conjugate, and alpha into alpha conjugate, what will come? 1. Why? And this we can write plus alpha into alpha divided by 1 minus alpha beta conjugate minus beta alpha conjugate ठीक है, and plus beta conjugate is 1 alpha into alpha conjugate into 1. Then this is carrying both sides, then this full same, denominator numerator same, so this cancel, then beta minus alpha upon 1 minus alpha conjugate beta modulus whole square is equal to 1. Then scaling both sides, so this implies beta minus alpha upon 1 minus alpha conjugate beta is 1. Modulus of this is 1 alpha. Because square, then square root both sides, 1 square is 1, and plus minus 1 only positive. Modulus always positive, so plus 1. Hence true. ठीक है, ये फाइंड करनी थी इसकी वैल्यू 1 हो. Done. Next question. Yes बेटा. Next question. Question number 12. What is this? This is find the number of uncounting. Find the number of non-zero integral solutions of the equation modulus 1 minus iota whole power x equal to 2 power x. अरे दिस इक्वेशन जो दी हुई है ये कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रखती है? नॉन जीरो सॉल्यूशन यानी एक्सेप्ट जीरो, अदर एनी सॉल्यूशन. हाउ मेनी आर देयर? हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर ऑफ द इक्वेशन दिस एक्सेप्ट जीरो, नॉन जीरो. नॉन जीरो का मतलब जीरो को छोड़कर कितने? हाउ मेनी solutions are there? Okay, so solve it. It means solution modulus of
power. How can solve 1 minus iota modulus? मॉडुलस कैसे सॉल्व होता है किसी भी नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का? मॉडुलस ऑफ दैट हाउ स्क्वायर रूट दिस फॉर्मूला, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. I told many times use this. So modulus of 1 minus iota, we can find a is here 1, a how much 1 and b कितना है यहाँ पर -1. ठीक है, तो यूज है मॉडुलस दैट. तो मॉडुलस ऑफ दिस सॉल्विंग व्हाट इज देयर स्क्वायर रूट a स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 प्लस -1 स्क्वायर आल्सो 1 and this power x is equal to 2 power x. Okay, then simplify. Power root means power half. 1 plus 1 2 and power half and whole power x. This equal to 2 power x. Then here 2 power to power multiply, so x upon 2. 2 power x upon 2 is equal to 2 power x. इसका मीनिंग क्या हुआ कि बेस सेम है, पावर सेम नहीं है और वैल्यू इक्वल है तो पावर मस्ट बी इक्वल. भाई बेस सेम है 2 2, पावर यहाँ x है x by 2, तो इट मीन पावर मस्ट बी सेम. x by 2 must be equal to x. Then simplify. Then x is equal to 2x. Then 2x minus x, x is equal to 0. तो सॉल्यूशन 0 है, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन. सो नॉन जीरो solution is not there, is not there. ठीक है, hence no non-zero solution. Non-zero solution. आंसर कितने हैं? कोई नहीं है, यानी नथिंग, नो वन एक्सेप्ट 0. ओनली 0 इज द सॉल्यूशन. ओनली 0 इज द सॉल्यूशन. ठीक है, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन हाउ मेनी? नो सॉल्यूशन ऑफ नॉन जीरो. ठीक है, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. इफ a plus iota b into c plus iota d into e plus iota f into g plus iota h is equal to capital A plus iota capital B. यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है. ओके, इस फॉर्म में गिवन है, तो फाइंड प्रूव दैट a square plus b square into c square plus d square into e square plus f square into g square plus h square is equal to a square plus b square. तो व्हाट इज हियर? तो गिवन से इसका प्रूफ शुरू है. प्रूफ टेकिंग जो गिवन है इसका क्या करना है? टेकिंग कॉन्जुगेट. ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट. Taking conjugate both sides. Any complex number given, तो इनका इक्वल है तो इनका conjugate भी इक्वल होगा. तो इसलिए क्या हो गया इसका conjugate?
बोथ साइड। तो ये इक्वेशन 1 कॉन्जुगेट इसका a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b, आयोटा साइन चेंज। सिमिलरली कॉन्जुगेट ऑफ c प्लस आयोटा d, c माइनस आयोटा d। सिमिलरली नेक्स्ट e प्लस का माइनस हो जाएगा e माइनस आयोटा f। ओके, सिमिलरली g minus iota x is equal, राइट हैंड आल्सो कॉन्जुगेट, प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस आयोटा b। दिस द कॉन्जुगेट, तो दिस इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बोथ। ओके, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 comma 2। Okay, what we get, this into this, this into this, this into this। ये मल्टीप्लाई में सारे वेक्टर लाइक लाइक कर सकते हैं, कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 2 3 4 ये हैं, 4 ये हैं, 8 नंबर है, तो कोई भी दो दो नंबर। तो टेक लाइक दैट a plus iota b into a minus iota b। so ये conjugate a square minus b square will come, a plus b a square minus iota square b square। okay बेटा, similarly next c plus iota d into c minus iota d, then a square minus b square c minus iota square d square। Similarly next e square minus iota square f square। next g square minus iota square h square, a square minus b square is equal to a square minus b square iota square b square। this formula algebraic, multiplied, then simplify, iota square is equal to minus 1, use this, then minus 1 and minus this, so plus, all will come this a square plus b square। okay beta, iota square value minus 1 this, then similarly c square plus d square and e square plus f square into g square plus h square, minus minus plus is equal to a square and minus minus plus b square। done, has proved। ये प्रूव करना था। okay, last question, miscellaneous question last, yes, next question, last question, question 14 of this chapter and this exercise we can say। okay, what is this? This is if 1 plus iota divided by 1 minus iota whole power m is equal to 1, then find the least positive integral value of m। least यानी सबसे छोटी, अब वो पॉजिटिव हो, तो then we have to solve this। okay, तो सॉल्यूशन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें अंदर इनसाइड द पावर, multiplied by the conjugate of denominator in numerator and denominator, means 1 plus iota
से मल्टीप्लाई किया इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। ओके, किससे मल्टीप्लाई किया? 1 प्लस आयोटा। ओके, then what is this? And whole power m as it is equal to 1 as it is. Okay, this implies now multiply किया whole square will be there, then a square plus b square plus 2ab means 2 iota divided by a minus b into a plus b algebraic formula identity a square minus b square. 1 square 1 minus iota square and whole power as it is m is equal to 1. Okay, now simplify the item and iota square value put. What is the value of iota square? Minus 1. Put this, use this iota square value minus 1. Then minus 1 plus 1 cancel, then 2 iota upon 1 plus 1, then 2 and whole power m is equal to 1. This implies 2 से 2 cancel, iota power m, iota power m is equal to 1. So what is least value? Positive. By iota power 2 की वैल्यू माइनस 1 है, iota power 3 की वैल्यू अगेन माइनस आयोटा, यहाँ पर है 1 आना चाहिए, तो iota power 4 because iota power 4 is equal to iota square whole square equal to minus 1 whole square is 1. So right hand 1. So we can write this iota power m. M is 4 because iota power 4 is equal to 1. Next, आगे भी आएगा. So this implies m value is equal to 1. Least value. Least positive value of m equal to 1. Okay. अब आगे भी है ना, इसमें आयोटा पावर 4 की वैल्यू भी 1 है. अब मान लीजिए आप कहें आयोटा पावर 8 की वैल्यू क्या होगी, वो भी 1 ही होगी. आयोटा पावर 8 का मतलब आयोटा पावर 4 पावर 2 और मल्टीप्लाई 4 to the 8 whole square of 1 again 1. तो iota power 8 also 1. तो लीस्ट वैल्यू ढूंढनी है हमें m की. टाइम की लीस्ट वैल्यू कितनी बनी? 4. लीस्ट वैल्यू ऑफ m is 4. आंसर 4. Iota power m is equal to 1. So iota power 4 is equal to 1. So m is equal to 4. Done. So this value of m is 4. Like, share and subscribe the channel and send the video to the other contact and guide them. They must subscribe the channel and send the video forward to the other contact and guide them. They must watch, like, share and subscribe the channel and you will get the every questions of the NCERT book of all chapters in the last video. You can open every video by taking the link from this video in the descriptions. So you will get all videos S2S Maths classes.
Okay, thank you.